Welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and today we are going to discuss with the new topic of mathematics. Before we are starting our class, let me introduce myself. Myself Gurdeep Kaur, and you're watching my channel Maths Master Academy by Gurdeep Kaur. As you know, if you have watched already the videos on my channel regarding PS-Chat, I have already cleared PS-Chat in Maths and CTET. Okay, and I have also done B.Ed in Math Science and MSc in Mathematics. Now, this is the regarding our introduction. Okay, now we are going to start with a new topic of 11th class maths. Okay, now everyone, when we are thinking about that maths, everyone got scared. Okay, now if you are going to take maths in your 11th class, we are going to be something interesting. Okay, now today we are going to discuss a new numbers, that is complex numbers. Don't get me confused regarding this name, that is complex numbers. Okay, now we have already discussed regarding about numbers. First we will recall that numbers. First is natural numbers. Okay, the numbers that are starting from 1 to up to so on. Okay, I don't think so we have to discuss these. Okay, but we are going just recall, and if you include 0, then that are called whole numbers. All right, and next is which are denoted by Z, and next is rational numbers which are denoted by Q. Okay, and irrational numbers and both sets conclude is called our रियल नंबर्स. हम इससे पहले सब यही पढ़ के आ रहे थे कि रियल नंबर्स में ही डिस्कस करते हैं हम हर चीज. ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने पहले ही पढ़ चुके हो. ओके, नाउ वी आर अपग्रेडिंग अवर नॉलेज रिगार्डिंग नंबर्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए क्यों? हमारे पास इतने नंबर्स तो थे, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों चाहिए? Alright, now let us suppose that we are going to discuss our equation. Let us suppose that ax square plus bx plus c is equal to 0. That is our quadratic equation. Alright, now in this quadratic equation you have already know that if the value of the root, that is our value of x, will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, and you already know that if the value of under root of b square minus 4ac greater than or equal to 0, you are dealing with real numbers. Alright, and what about if this will be negative? What about, we have already discussed that if b square minus 4ac less than 0, then that value will be neglected. Okay, हम वो वैल्यू छोड़ देते थे वहीं पे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे, वो बात आज आ गया. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे. अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमें क्या मिलेगा?
अगर हमें ये नेगेटिव मिल रही है देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। ओके, जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिल रहे हैं हमें? इमेजिनरी मिल रहे हैं। ऑलराइट, अगर रूट्स इमेजिनरी मिल रहे हैं देन इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी नंबर? What do you mean by imaginary number? Okay. Now, imaginary number हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई। ओके, ये साधारण आई नहीं है जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एक वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं आइटा। दिस इज कॉल्ड आइटा। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ आइटा विल बी अंडर रूट ऑफ -1। इट मीन्स दैट अगर आपके पास जो रूट फाइंड करने वाले हो आप, ठीक है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी नंबर, दैट इज आइटा। ओके, सो जो आइटा होगा उसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ -1। इट मीन्स दैट अगर हम आइटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कितनी मिल रही है हमें? -1। ओके, because squaring on both sides, square will get cancel out. All right. Now iota square will be -1. What about iota cube? Iota into iota square. Okay. The value of iota square is -1. That will be minus iota. All right. Now what will be the value of iota 4? Iota square. It means that -1 into -1, that will be equal to 1. Okay, so these are some important results. You have to keep in your mind that what is the value of iota square, iota cube and iota raised to power 4. Okay, so first of all, if आपके पास सम आ जाए जिसमें आइटा रेज़ टू पावर 4 हो या कोई भी बड़े नंबर की वैल्यू मिल जाए जो 4 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो आप सीधा 1 लिख सकते हो। दैट मींस डिस्कस फर्दर। ओके, सो हम इसके साथ के सम सॉल्व करेंगे आज कि अगर आइटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए तो हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी हम अपने टॉपिक की तरफ ही जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी द यस, नाउ हमें अभी आइटा की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो हमारे पास z क्या हो जाएगा? x plus iota y. This is called a complex number. ओके, आइटा उसके लिए यूज होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज रियल पार्ट and the second one is imaginary part. First one is real part and the second one is imaginary part. All right, जो real part होता है, ठीक है, let us suppose that z की क्या वैल्यू है? 5 plus 3 आएगा। so 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? रियल पार्ट आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट है। मतलब जिसके साथ आइटा लगा हो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और दूसरा जो फर्स्ट वाला बिना आइटा की टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट बोलेंगे। ऑलराइट, नाउ इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z के ऊपर बार डाली होगी, इसको बार नहीं बोलना। ठीक है, इसको क्या बोलना है? conjugate of a number। जो बेसिक थिंग्स होंगी वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सम्स हम आगे से सॉल्व करने शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो z बार क्या होगा हमारे पास?
आइटा है, जो आइटा है उसको माइनस आइटा में चेंज कर दे तो उसको कंजुगेट हो जाए। ऑलराइट, सो 5 minus 3 iota gonna be your conjugate of number z। ऑलराइट, ठीक है। आई होप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो रूट्स थे अभी तक रियल ही हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम रियल नंबर्स के साथ ही डील कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर +1 क्लास से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, इमेजिनरी नंबर्स में जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलराइट, सो +1 का मैथ 10 से शिफ्ट जरूर करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा होता है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम पूरा मैथ डिस्कस करेंगे मेरे चैनल पर, ओके। सो स्टे ट्यून। Alright, before we are ending our class, I am going to ask a question. A question for you. Now, आपको ये तो पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, alright? कोई मुझे बता सकते हैं? 5 is a complex number. Is 5 a complex number, alright? ठीक है। मेरे को बताना कि 5 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हो तो क्यों? अगर नहीं बोल सकते तो so think about it and you're gonna be answer in my comment section, okay? Alright, so stay tuned for more videos on my YouTube channel, that is Maths Master Academy by Gurdeep Kaur. Till then, goodbye and thank you so much.